कुंडी कला में कौन कौन रहता है बेटा? नाना नानी कहाँ रहते हैं तुम्हारे? मेरे को नहीं पता। हाँ, मिलने की इच्छा है ना नाना नानी से? जी नहीं। है? जी नहीं। कौन सी क्लास पढ़ रही हो? 7वीं। 7वीं कक्षा। जी हाँ। स्कूल का नाम बताओ अपने। मदर का कहना है कि अभी 2 घंटे मिलने दिया जाए। Yes. इतने साल बाद मिल रही है। 2:15 मिला Let the- जाइए, the child- कॉफी हाउस में चाय वगैरह पी के आइए सब साथ में, The है child ना? along with सब the साथ में father. जाइएगा। Your Lordships, on the last date of hearing, Your Lordships had directed to produce the child. She's Yes. present. मम्मी से मिली हो? इधर आ जाओ, इस माइक में आ जाओ, इस माइक में आ जाओ, मम्मी की तरफ के माइक में आ जाओ। मुलाकात हुई है? मम्मी से मिलो। हाँ, चलिए अब। हाँ, आप इनसे यहाँ पे कहाँ रहते हैं अभी? कहाँ रहते हैं अभी? इधर आओ। और आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? घबराइए मत, आराम से, घबराइए, आराम से बोलिए। आराम से, हड़बड़ाइए मत। हाँ, अंबिकापुर में हाँ, कुंडी कला गाँव में। है? अंबिकापुर कुंडी कला गाँव में। कुंडी कला गांव में। हाँ। कुंडी कला में कौन कौन रहता है बेटा? नाना नानी कहाँ रहते हैं तुम्हारे? मेरे को नहीं पता। हाँ, मिलने की इच्छा है ना नाना नानी से? जी नहीं। है? जी नहीं। नहीं है मिलने की इच्छा नाना नानी से? जी नहीं। हाँ, है पिताजी जिंदा है? नाना इनके आपके पिताजी हैं? जी है। मदर है। मदर वगैरह? है। custody battle, where she want to stay, basically. Have you have a conversation where she want to stay? In the morning, she told me that she wants to stay with the father. Him. What is the age? About 12 years. 11 and a half, 12 years. कौन सी क्लास पढ़ रही हो? 7वीं। 7वीं कक्षा। जी हाँ। स्कूल का नाम बताओ अपने। संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय महुआडांड। कहाँ? संत तेरेसा बालिका उच्च विद्यालय महुआडांड। If she doesn't want to go, how can it be by force? Basically. The fact is such कि हाँ? जब 3 साल की थी, हाँ, तब she से must have been. तब Now, से what फादर can we के say? साथ Help? हाँ, और एक बच्ची इनके साथ रह रही है जो 6 महीने की थी उस समय, और ये 3 साल की उम्र से ही अब लड़ते लड़ते साहब अब 11 साल की हो गई और फादर के साथ ही। तो एट दैट टाइम शी वाज नॉट एबल टू इवन रिकॉग्नाइज हर मदर। नाउ शी इज लिविंग मीटिंग हर आफ्टर 7 years or 6 years. और visitation The right. mother, by force, how can we send the child? That is the whole question. If she is willing, it's okay, whatever may be. Otherwise, you have to develop this contact right. Whether they are not able to develop that also. He is residing somewhere else. Yes, मिलने नहीं देते थे, जाती थी, तो यही है। और मदर का भी यही कहना है कि अगर Where to meet? Supposing if he forced by judicial order, where to meet? He resides where somewhere Another state. Jharkhand, जी and she resides at Ambikapur. कितना distance है दोनों में? हाँ, 150 kilometers. 150. You ask that he should bring the child once in a month. He must have been tutored, now poisoned entire mind. She is residing there with her father for last. That attachment has to be developed. It can't be by the judicial order. And by judicial order, we will force to meet. Then human relation will develop. मदर का कहना है कि अभी 2 घंटे मिलने दिया जाए। इतने साल बाद मिल रही है। 2:15 मिला क्योंकि 3 साल की उम्र की थी तब से ले गए थे। उसकी बहन को लाए कि नहीं लाए हैं? दूसरी बहन नहीं लाई। सर स्कूल रहती है ना बच्ची ठीक है, का। ठीक है, इनको अभी इनके कस्टडी में मिलने दें अभी। टेक इट एट 2:15। ठीक है, टेक इट एट। जाइए, कॉफी हाउस में चाय वगैरह पी के आइए सब साथ में। The child along with सब the साथ में father जाइएगा। and the mother are present. The mother requests that she may be allowed to meet child for 2 hours.
But What to do then? she has no objection. She only wants that visitation right, that father may bring her to within 2-3 months, once in a 3 months to Ambikapur, so she can. ठीक है, वो ऑर्डर कर देता है. Sir, if it's possible, if he cannot take her, if she can come and visit. हाँ? If he cannot take her to Ambikapur, if she can also come from time to time, every 2 months, if they can meet once, and if she can also come to where they are staying to meet her at times. Why he cannot come? Yes? He'll take her to Ambikapur. ठीक है. At least she has a right to meet. Your Lordship. Visitation, हाँ? Yes, कर देते हैं उसमें फिर. जी. Dispose off कर देते हैं फिर. Yes, my lord, that. या कुछ दिन पेंडिंग रखे. Let us see, let us monitor this. जी. Not immediately dispose off. जी. Don't know what will happen in the future with the visitation. The girl and the. Or it can be disposed of. If not, then I will move an application before this honorable. इसको occasion arise. हाँ, it's okay. If any occasion will arise, Why? that The liberty appellant may in be. person and the respondent, children along with the father is in person. They were allowed to meet. The mother, the appellant was allowed to meet. He spent considerable time. It has been stated by the parties that the girl want to stay with the father. However, the mother appellant submits that she may be allowed to meet the girl, and he may, and the respondent may be directed to allow the may be allowed. Respondent may be directed to bring the girl to the appellant at Ambikapur in a reasonable gap of period. The respondent, Aslam Khan, who is present in person with the counsel, submit that he will bring the child to Ambikapur. कितने महीने में लेके जा सकेंगे? 2 महीने में, 1 महीने में? 1 महीने में कीजिए. कुछ नहीं होता, संडे को लेके जाएंगे. संडे को ला दूंगा. On Sunday, on every month. कितने दिन रहेगी? Third, हाँ? कितने दिन रहेगी यहाँ? रात के लेके जाना होगा. हाँ, तो 1 दिन रुकने का कर देंगे. हाँ, 1 दिन स्पेंड करेगी. We'll bring her to her mother at Ambikapur on 3rd Saturday and Sunday. He will stay for a night. Thereafter, on the next day, the father would be allowed to take her, respond number 2, take her back. The respond number 2 shall spend time along with the mother and mother at her house in Sarguja. इतना ही. हर तीसरे चौथे जो सैटरडे संडे होता है ना, उस दिन लेके जाएंगे. नहीं होगा तो यहाँ से हम ऑर्डर करेंगे, फिर तकलीफ में पड़ेंगे आप, है ना. कैजुअली मत लीजिए. हर महीने बन जाएगा आपसे? बन जाएगा. The appellant with this, the appellant mother is satisfied with such visitation right, as she has no means. Therefore, we also justify the fact. We also feel it justified that the father would bring the children on every 3rd Saturday, Sunday. And since it has been stated that the distance is more than 150 kilometers, therefore overnight stay, she would be at the company of the mother. Respond number 2 would be in the company of the mother for a night. The mother submit that she is satisfied with the order. As such, at this moment, we do not want to deliberate on this custody issue at this moment. If the occasion so arises in future, appellant shall be free to move the suitable application before the appropriate court. ठीक है.